See, if you have not done, because you can see that we have done a lot of lectures on equilibrium itself. That is why आज की class शायद आपको समझ में ना आए. By the way, where are you from? I'm from India, Bangalore. You study in Bangalore itself? Yeah, you No, live I from live in Qatar. which school? Which school in Qatar? Rajgiri Public School. That's very public school. Today's Tuesday. Peer Ali, Jobita, Justine, Ripa, Shine. Friends are here. So, by the way, guys who were present in the last lecture, we did the pH calculation of like different categories. For example, we did the pH calculation of strong acid, strong base. We did the mixture of strong acid. We also did mixture of strong base. And we also did mixture of strong acid plus strong base. Now we need to do the not mixture, rather weak acids and weak base. Okay. We need to calculate the pH of weak acid and weak base. Right. Weak acid and weak base के pH हम लोग देखेंगे. Now please write this with me. Let's see exactly how much was done. Mixtures of strong acid and strong base के लिए ना. Have we done the ionization of acids and bases? No. Okay. Now, for weak acid and weak bases, we need to build up a concept regarding the ionization of acids and bases and what happens if the acid does not dissociate completely and if the base does not dissociate completely. Therefore, just try to understand whatever you can from this particular lecture and then we can move forward and we will see how to continue with this. ठीक है रिफा? Yeah. Okay. So, when will you complete this chapter? This chapter would require, I think, one or two more classes. Okay. Okay. So, like, how the video will be there, right, for this chapter? For me to look. Yeah, the videos will be available. Like for all the chapters, the videos will be available. The recorded lectures will be available. But hopefully, like there will be some extra classes for you. Okay. So maybe we can cover it in that part. By the way, when is your examination? So, no, it's January 12th. Wait a second. So these chapters are not completed in the school itself, right? या फिर आपका नहीं हुआ है सर? No, school itself, it hasn't. तो स्कूल कैसे कंप्लीट करेगा इतने चैप्टर्स एक महीने में? I don't know, but they said they will complete the portions by December 15th. But we are going to complete hydrocarbons like this week. So 1, 2, 3, 4 chapters are remaining, and you have like Yeah. 1 month. Yeah. They are doing the examination in January only to start the 12th standard quickly, right? Yeah, to start that in March. Okay. Actually, we will worry about that later on. अभी to try to focus है ना, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया ना तो थोड़ा ट्राई कीजिएगा रीपा, ठीक है? Right? Okay. Yeah. So the topic is, guys, ionization of acids and bases. Other students, they will be keeping in mind, taking a mental note. यार राजगिरी में कोई अगर कतर में रिश्तेदार रहता है उसको राजगिरी में बोलेंगे नहीं डालने के लिए. Right, guys? Anyone from Qatar here? I don't think so, ना? कोई कतर से है? No, no one is from Qatar here. Ionization of acids and base.
तो बिहार की एक बहन थी, उसका no one is from MES school here, na? MES, no, no one is here. ठीक है. Ionization of acids and bases, है ना? ठीक. For acids, what will happen? You are going to generally write acid as Ha, and acid will give you H plus and A negative, है ना? It will give you H plus, and the counter ion will be A negative. For this, we can write the equilibrium constant as K, which is equal to the concentration of H plus into the concentration of A negative divided by the concentration of Ha. Now, because this is the dissociation constant of acid, we write it as Ka. Now, if I have a strong acid, it will give more H plus or less H plus. Now, you need to turn your mic on, guys, and tell me. If I have a strong Just acid, it will give more H plus. If it will give more H plus, then this will be higher and Ha will be becoming lower and lower. The concentration of Ha will decrease. Make sense? Yes or no? Yes or no, guys? Really? Okay, fine, Zanab. Is everything all right, Zanab? yes, sir. Yes or no, guys? Tell me. In the H plus ion increases, so the Ha will be less because more and more Ha will be dissociating in order to form H plus ion. Yes or no, guys? Tell me. जल्दी बताएं. Yes, sir. Makes sense, right? चलिए. That means if I have a strong acid, its numerator will be higher, denominator will be lower. So I can say that strong acids have higher Ka, have higher Ka. Fine. Make sense? Yes or no? जल्दी जल्दी बताएं. Yes or no? Yes, Yes or no sir. तो बोलते रहे कम से कम. Thank you very much. Now, next thing is that there is one thing we have learned, that is pH. A similar thing is pKa. What is pH? pH is the negative log of H plus. pKa is the negative log of Ka. So if the Ka will be larger, log of K will be larger. But if I do minus, so it will become lesser, है ना? Because it is negative sign. So I can say that strong acids have smaller pKa. Now, I hope for the basis you can understand on yourself. खुद ही समझ जाएंगे आप लोग. And if I want to write the same things for bases, if you have not written, don't worry, I will give you time to write. ठीक है? See, for bases, you will write base as BOH in equilibrium with B positive and OH negative. So the dissociation constant for base will be equal to the concentration of B positive multiplied by the concentration of OH negative divided by the concentration of BOH. Now, since it is the dissociation constant of base, I will write Kb, and this is denoted by Kb. Now, as strong acids have higher Ka, strong base, strong base have higher Kb. The dissociation constant will be higher. Now, similarly, pKb जो होता है, which is equal to negative log of Kb, and I can say that bases, strong bases have smaller pKb. You copy this down. Raise your hand once you're done. By the way, Rifa, where did you get to know about Learnivio? I used to have tuitions for maths, 1-to-1 in learning for 10th grade. The 10th grade with me. Sir, why didn't you choose Learnivio in 11th standard? What happened?
Actually, by the time I thought I would manage it, but then after half yearly exams, I think I needed tuitions again. Join. ऐसे एक कहावत नहीं है, अरे जो होगा देखा जाएगा, सिर्फ जो होने लगता है वो देखा नहीं जाता है, वही हो गया क्या रीफा? Yeah, somewhat. थोड़ा लेट हो गया आप लोग। Yeah, but from 12th, I will start at the beginning. So, बट आई मीन लाइक केमिस्ट्री में ऐसा है ना, थोड़ा आई मीन you have a little bit of difficulty, although it's not too much related, but it's that now chemistry has, I mean, it's not a subject that we have studied for a very long time. If I talk about humanity also, no, like humans knew about chemistry only like in the past 200 years. तो जो लाइक ब्रेन का इवोल्यूशन होता है ना, वो अभी मैथ के लिए तो फिर भी ठीक है, लाइक वी कैन डू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वेरी इजीली इफ यू थिंक अबाउट लाइक 1000 years बिफोर। मतलब आर्यभट्टा के टाइम में जो मल्टीप्लिकेशन कर पाता था वो राजा के यहाँ मिनिस्टर था, राइट? तो वी हैव डेवलप्ड टू मच, इतना मैथ्स आ चुका है हमारे पास कि लाइक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अब मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लिकेशन आराम से, मतलब 10th के उससे छोटे बच्चे भी, बट दैट टाइप ऑफ थिंग इज नॉट देयर इन केमिस्ट्री, एंड आई थिंक दैट शोज व्हेन यू राइट द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, आप लिख रहे होते हैं फिर भी मार्क्स नहीं मिलता है। ऐसा yeah, हुआ है आपके साथ, है ना? यू न्यू द क्वेश्चन and you wrote the answer also, but you did not get the marks, and that is only because the thought process of chemistry is a bit different, क्या, बिट न्यू, मतलब क्या सवाल, मतलब फिर उसमें फिर बच्चों को लगने लगता है अरे केमिस्ट्री के टीचर तो बोलते जो हमने लिखा है बस वही लिखो। इट्स नॉट एक्चुअली दैट, मतलब वो समझा नहीं पाते हैं सही से कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे, क्या व्हाट इंफॉर्मेशन डज दी क्वेश्चन वांट्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यू। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा फिर आपको हल्का सा डिफिकल्टी रहेगा 12th में, नॉट रिगार्डिंग द कंसेप्ट बट द थॉट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री, उसको समझने में है। लेकिन धीरे धीरे okay, मेहनत कीजिएगा तो आ जाएगा, इट्स नॉट टफ, टफ नहीं है केमिस्ट्री। इसी वजह से देखते होंगे द वेरिएशन इन केमिस्ट्री मार्क्स इज टू लार्ज इन एवरी क्लास, कि कुछ बच्चों का तो भैया हमेशा 60 से, मतलब 70 मार्क्स पेपर इज देयर, देन 60 से ऊपर ऊपर, 60 से ऊपर ऊपर, अगला जो बच्चा है उसका आ रहा है 40 मार्क्स। दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन अदर सब्जेक्ट। हो गया सबका? ओके फाइन, रीफा यू आर नॉट राइटिंग ना, ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बाकी लोग के साथ भी हुआ है ना इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, दैट यू रोड द आंसर बट स्टिल यू डिड नॉट गेट मार्क्स? जसलीन, अबीर, जबीता, शाइमा, जैनब, आप लोग बताइए। Yes. अच्छा, अगर ओके फाइन, सो अबीर, इट हैज हैपेंड विथ यू ना, देन यू प्लीज लाइक डिस्कस इट विथ योर, नो सर, ओके, डिस्कस इट विथ योर लाइक टीचर के साथ भी थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा, एंड देन सेंड द आंसर शीट टू मी इफ यू हैव द आंसर शीट। ऑल्सो अनदर थिंग, एक और चीज जनरलाइजेशन आपको बताते हैं, there are two types of students ना, there are passionate students and there are students of habits। स्टूडेंट्स ऑफ हैबिट उनका सिंपल है, वो आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में होमवर्क मिलता है, घर में आते हैं, उनको होमवर्क करना ही करना है। मतलब ये बताने वाली चीज है क्या, होमवर्क नहीं करना, होमवर्क करना, मतलब कुछ बच्चों को फिर पेरेंट्स को बताना पड़ता है अरे होमवर्क दिया है, होमवर्क कर लो। ठीक है, द स्टूडेंट्स हु आर हैबिचुअल स्टूडेंट्स, दे विल गो टू स्कूल, दे विल लर्न, दे विल कम बैक, दे विल रिवाइज। अरे ये तो पूछने वाली बात है क्या, रिवाइज करना होता है? रिवाइज तो करना ही होता है। दे आर स्टूडेंट्स ऑफ हैबिट। तो जनरली द स्टूडेंट्स ऑफ हैबिट, सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में समझ में आ जाता है कि आंसर कैसे लिखना है, तो दे जनरली डू बेटर इन केमिस्ट्री, व्हाट आई हैव सीन। देयर आर सम पैशनेट स्टूडेंट होते हैं, दे हैव अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, इनको समझने की बहुत इच्छा है, दे अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, दे ग्रास्प इट बेटर, क्लास में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्लास में आंसर करेंगे, बहुत बहुत अच्छा से करेंगे, एंड जब वो किसी चीज को पढ़ने के लिए बैठते, दे विल गो डीप इनटू इट, बट वो आउटपुट उनको ना एग्जाम्स में नहीं आता, फिर उनको मेंटालिटी, वन पेपर कैनॉट जज द, कैनॉट डिसाइड वाला मेंटालिटी आ जाता है उनके अंदर। ठीक है, बट the thing is what is different between the habitual student and passionate student? Habitual student daily consistent work कर रहे हैं, passionate ones are also a bit lazy because they rely too much on their mind, वो अपने दिमाग पे ज्यादा ये करते हैं कि I will, if I put my hours I will get it।
इट्स ट्रू बट दैट डजंट रियली बिकम ट्रू फॉर केमिस्ट्री बिकॉज वही है केमिस्ट्री के बारे में जो मेंटल थॉट प्रोसेस है वो आपका 11th स्टैंडर्ड से ही इंग्रेन होना चालू है और फिजिक्स इफ यू गिव दी आवर्स और थोड़ा सा क्रैक कर लिया आपने ना देन यू कैन राइट इट मैथ्स में यू कैन राइट इट इफ यू डू इट बट इन केमिस्ट्री दैट थॉट प्रोसेस इज समवॉट न्यू तो उस वजह से वो पैशनेट स्टूडेंट्स का ना वो फिजिक्स और फिर मैथ्स अच्छा लगने लगता है केमिस्ट्री फिर खराब लगने लगती है this I came to know like after my brother gave the 11th and 12th standard examination मेरे भाई का इतना खराब केमिस्ट्री था इन द जे एग्जामिनेशन उसने सिर्फ केमिस्ट्री में सी थी इन मैथमेटिक्स ही गॉट 98.9 परसेंटाइल he was like math he is doing math only now केमिस्ट्री में सारे ऑप्शन में सी भर के आ गया बट आई वाज आल्सो लाइक लर्निंग एट दैट टाइम मुझको इतना पता नहीं था बट दैट गेव मी एन आइडिया कि केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है since right here. Next point is see, this is for all the acids and bases. Now we know that acids and bases are of two types, strong and weak. Weak acid और base में क्या होगा? Please write. Since weak acid and base dissociate partially, hence they have degree of dissociation. Hence they have degree of dissociation. What is the meaning and how do you understand degree of dissociation? For example, degree of dissociation it is shown by alpha by the way. If the alpha it is equal to let's suppose 0.1, it means that if you take 100 molecules then you will get if you have taken 100 then you will get 10 H plus from it and if I talk about acids okay so it is basically degree of dissociation it is equal to number of molecules which ionize divided by total number of molecule of electrolyte okay write this down then I will give you an idea like what is degree of dissociation and how to think about it just raise your hand once you're done writing this it is alpha like this all of you done no? How to understand about it okay you need to give answers now है ना I'm saying that alpha it is equal to let us suppose alpha it is equal to 0.1 right
So if I have 100 molecules, then I will get how much will dissociate? 10 will dissociate. Make sense? Yes or no, please tell me? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes? sir. Yes, Give the sir. answer. Give the answer. Huh? If we have 200, then how many will dissociate? 20. 20. 20. If I have, let us suppose 1000, then how many will dissociate? 100. 100. 100 will dissociate. So if I have 1500, then how many will dissociate? 150. 150. 150 will dissociate. So if I have X, then how many will dissociate? 0.1x. 0.18. Make sense, everyone? Yes or no? That's what's happening, Yes, sir. right? And that's what is happening. And if I have 100, then it is 100 into 0.1. If I have 200, it is 200 into 0.1. And that much is dissociating, right? This is like, have a conceptual, like you have an idea of 100, 200, like how it is coming. This is from, if I have 1000, then 1000 into 0.1. If I have 1500, then how many will dissociate? 1500 into 0.1, right? Now, that's the same thing we are going to use. Please don't write now, try to understand for weak acid. For weak acid, we have Ha. This will dissociate into H positive and A negative. Now, initially, we will have C concentration of acid. There will be 0 H plus and 0 A negative. Now, some of the acid will dissociate. How much will dissociate? So C alpha will dissociate as we have said 0.1x. The 0.1 is the alpha, x is the amount of substance we have taken. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. C alpha makes sense now? Now changes the minus y minus because it is decreasing. So how much H plus we will get? We will get plus C alpha of H plus and plus C alpha of A negative also. At equilibrium, what will happen? We will have C minus C alpha. Here we have C alpha and here we have C alpha. Now, the acid dissociation constant Ka is equal to the concentration of H positive into the concentration of A negative divided by the concentration of Ha. ठीक है, divided by the concentration of Ha. अब ध्यान से देखिए जरा. Now, what is H plus? Tell me, guys. At equilibrium, what is H? By the way, all of these concentration are at equilibrium only, है ना? Ka is K dissociation or K equilibrium constant होता है. It is defined at equilibrium. So, what is the concentration of H plus at equilibrium? Tell me, guys. 10 to the power minus 7. नहीं, it is C alpha. वो तो उसके लिए होता है ना. For water, it is that ना. Makes sense, yes or no? Yes, sir. Right now, it is C alpha, right? It is C alpha. And what is the concentration of C alpha? What is the concentration of A negative, guys? C alpha. Very good, C alpha. And what is the concentration of the acid? Yes, Ali, correct. Minus 0. What? यार mic properly on करके बताएं. Please don't like use the space bar. Is what is the concentration of Ha at equilibrium? C minus C alpha. Very good, C minus C alpha. Now what we can do? We can take common the C here, and you will get C square alpha square divided by C is common and 1 minus alpha. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. C and C square will get cancelled. So our Ka will be equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, like, can I write like this? Similarly, for weak base, Kb will be equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Correct? Yes or no? Same चीज ही तो होगा. It will be like we will having the same thing, ना? Because like this concentration, like I stable will be same. We will take C amount of base. The alpha will be degree of dissociation. The same thing will happen. Correct? Yes or no?
हाँ या ना तो Yes. बोल दीजिए, है ना? तो यू विल रिमेंबर. Copy this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Jovita and Zainab. शरीफ आपको आ रहा है कुछ भी? Mm. Sorry, what? No, I can't understand. हाँ, ये नहीं आ रहा होगा अभी आप. So when will you start the new chapter? So that Like I said, like this would require like at least 2 more classes. okay. So like when you complete this chapter, then for the new Hmm. chapter I can join the classes, right? But the new chapter that I had planned was redox reaction. Oh, But I think okay, like I will talk with the team and we will see, and so we can start maybe organic chemistry. ठीक है? okay, okay, okay. Because ऐसे ही मतलब like with you or like without you, we have to do organic chemistry anyhow. So we will see. Okay. Okay, everyone is done. Okay, write a few notes. Note if Ka or Kb is very less or when alpha is very less than 1. Now you can see that here. Now 1 minus alpha mein, if the alpha is very less than 1, then it does not really mean anything to subtract from 1. है ना? If I have, let's suppose, 1.0.007, so it's not very much, it does not really make sense to subtract anything like 0.007 from 1. It is like we have 10,000 में से 7 subtract करना. Doesn't really make any sense, right? So that is why whenever we have something like this, we ignore the alpha from denominator. We ignore the alpha from denominator. Then ignore alpha in 1 minus alpha, है ना? Because we are subtracting, then only we can neglect it. But if there is multiplication, we cannot neglect it, right? Because
it will make a huge difference. If I have 1 into 0.001, this 1 will become 0.001. हाँ, लेकिन अगर 1 माइनस हम लोग 0.001 करें, this is approximately equal to 1 only. Make sense? Whenever there is things in multiplication, we do not neglect. Addition and subtraction में we do neglect. So what will happen? The K, whether it is for acid or base, it will become equal to C alpha square upon 1 minus alpha, which could be written as C alpha square only, because 1 minus alpha, when I'm ignoring the alpha, there will be only 1. So K will be equal to C alpha. Make sense? Yes or no? C alpha Yes, sir. square. Now I Yes. can write alpha square will be equal to K upon C, and alpha will be equal to under root of K by C. Raise your hand. It will be always C alpha square. हाँ वो आप मतलब ठीक है. तो दैट इज फॉर यू ना शायद केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, लेकिन ना वो आपके स्कूल में वो सवाल वैसा नहीं देंगे ना. एज आई थिंक दे हैव डन दिस टाइप ऑफ अपने तरफ से सिलेबस में थोड़ा सा कि 10 to the power -8 मोलर HCl वाले सवाल नहीं देंगे, राइट शायद आप? Yes, sir. हाँ तो वो आपके लिए, मतलब हमको तो सबके लिए पढ़ाना है. इट विल बी ऑलवेज सी अल्फा स्क्वायर. हाँ दैट इज ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए ना वो हमेशा सी अल्फा स्क्वायर ही रहता है. दिस वी हैव टू टीच बिकॉज ऑफ MCQs. MCQs में तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं ना. आई मीन यू कैन नॉट आस्क फॉर्मूला एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है. But they can ask in MCQ, like in order to calculate the pH, sorry, the degree of dissociation for a weak acid whose alpha is less than 1 will be equal to what? You have to remember this formula. Okay, everyone is done? ठीक है. ध्यान से देखिएगा. Next one is important. When alpha is less than 0.1, always ignore alpha. तो जब भी आपके पास ना, whenever you are going to have a question on the weak acid or weak base, you will always calculate the alpha. हमेशा आप लोग अल्फा कैलकुलेट कीजिएगा. कैसे? एज्यूम करके ये प्रेडिक्ट कर लीजिए पहले दैट वो कम ही है ना. यू कैलकुलेट द अल्फा यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला. इफ यू कैलकुलेट द अल्फा यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड इट कम्स टू बी लेस देन 0.1, देन यू कैन इग्नोर द अल्फा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, ध्यान से देखिएगा. फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, when alpha is less than 0.1, concentration of H plus, और फॉर एसिड के लिए concentration of OH negative, for base at equilibrium is equal to, ध्यान से देखिएगा, H plus के लिए कितना है? C alpha, yes or no? Concentration of H plus at equilibrium is C alpha. Make sense? Yes or no? Yes, sir. Yes. And the same thing will be for the base also. It will be equal to C alpha. C alpha. Now we know that K, it is equal to C alpha square when it is less than, when alpha is ignored. If I multiply C on both sides, I will get K into C is equal to C square into alpha square. Make sense? Yes or no? बोलो भैया. Yes, sir. I multiplied C. Now if I root it, then root of K into C will be equal to C into alpha. Make sense? Yes, sir. And C into alpha is nothing but the concentration of H plus or OH negative.
right? This is only what? The concentration of H plus, or if it is weak base, then the concentration of OH negative. Okay. So this will be equal to under root Kc. Simple. For this, write a question. Concentration of NH4OH is given to be 0.1 molar, and the Kb for this reaction will be equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. Calculate pH of the solution. Ali, can you please turn your mic on? Yes, sir. एसिड के लिए H प्लस विल बी सी, मतलब सी अल्फा और K इंटू सी अंडर रूट K इंटू सी. फॉर बेसिस OH नेगेटिव विल बी सी अल्फा और K इंटू सी अंडर रूट K इंटू सी. ठीक है. द Yes, फॉर्मूला sir. इज सेम. बस यहाँ पे देखिए, अगर एसिड है तो आपको K यूज करना पड़ेगा, एंड इफ इट इज बेस यहाँ पे यूज KB. मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. Raise your hand if you're done, guys. I'm waiting for Jobita and Jasleen. चलिए. देखिए, हाँ, इन दिस क्वेश्चन सी हियर. ठीक है, डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हैं ना. इट डजंट रियली मैटर. लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन में तो कभी भी इसके अलावा कोई और चीज पूछता ही नहीं वो, है ना. ठीक है. बट जस्ट टू शो यू हाउ टू डू इट, first I will calculate the alpha, which will be equal to under root K upon C. K is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 divided by C is 0.1 under root. So this will be equal to 1.8 into 10 to the power minus 4 under root, which will be equal to something 10 to the power minus 2. Under root of 18 will be 18. Under root of 1.2 है ना. Sorry, under root of 1.8 into 10 to the power minus 10 to the power minus 2 is what? 0.01. So obviously into something, if I will do, it will become lesser only, right? Under root of 1.8. So this value, I can say that alpha is less than 0.1. Yes or no, please tell me, guys. 0.01 है ना, into something. So alpha Yes, will be sir. less than 0.1. So I can use directly that concentration of OH negative will be equal to under root of Kc. Under root K into C. Now K is 1.8 into 10 to the power minus 5 into 0.1. This will be equal to, now this calculation is important है. Calculation कैसे करना वो भी मैं आपको सिखा रहा है. 1.8 into 10 to the power minus 6. Fine. Now whenever you have decimals, now whenever you have, see, 10 की power तो हमेशा you have to keep it
even only in order to take out from the square root. So we will keep this even, but we have to remove the decimals also. So what I will do, I will write this number as, if I remove one decimal point, it will be equal to 10 to the power minus 7. So that is why I will shift the decimal point two places. It will be 180 into 10 to the power minus 8. Does it make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Right. Now this will be equal to 10 to the power minus 8 will come outside. It will become 10 to the power minus 4 under root of 180. Now, like under root of 180 will be somewhere like it will be between 13 and 14. Right? Yes or no? 13 ka square, it is equal to how much? 169, I guess, right? And 14 square is 196. 196. It is somewhere between, and it is more closer to 13, I guess, right? Yes or no? Yes, sir. So approximately 13.4 आएगा. But now how to do it also? तो इसके लिए समझ लीजिए. If you want to find the root of x, and x is not a perfect square, then it could be written as x plus y upon 2 root y. What is y? Y is a perfect square. Y is a perfect square before x. ठीक है, क्या मतलब? So we have right now, what number we have? 180. And तो 180 से पहले कौन सा आएगा? 180 से पहले 169 आएगा. So this will be equal to x is 180 plus the perfect square before 180. What we have? We have 169 divided by 2 into root y. Root of 169 which is equal to what? 13. ठीक है. अब देखिए ये कैलकुलेट करने में भी टाइम लगेगा, इस वजह से हम अंदाजन से बोल रहे हैं. अंदाजे से आप 13.5 13.4 कर सकते थे. दिस विल बी इक्वल टू 349 डिवाइड बाई 26. ठीक है. तो लगभग आपका हम ऐसे बोल सकते हैं 350 अपॉन 25 कर दें, चलेगा? क्या ख्याल है? 350 अपॉन 25 Yes, चलेगा ना? sir. हाँ सर. 350 अपॉन 25 नहीं चलेगा भैया, वो 14 आ जा रहा है. 14 तो होगा नहीं, है ना? परफेक्ट कर आ जाएगा फिर, तो वो तो होगा नहीं. यू हैव टू कैलकुलेट दिस वे, है ना? बट आई थिंक इट इज गुड टू अस्यूम it will be around 13.5. So 13.4 I would say, because it is more closer to 13 into 13.4. Let me see root of 180. हाँ, it is 13.416 करके ही है. तो अंदाजे से आप लोग कर सकते हैं. This is the OH, but we should not have to calculate the OH. We have to calculate the pH, है ना? तो अब देखिए pH निकालना है आपको. You have POH. कैसे होगा? याद है किसी को? You have the concentration of OH negative. 14 minus PO. हाँ भैया, तो 14 माइनस POH बोल रहे हैं. 1 होगा. अरे भैया 1 कहाँ से हो जाएगा जैनब? तब भूल गए आप लोग. Like by mistake later. अच्छा, बाय मिस्टेक हो गई. ये हम लोगों ने जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में जब हम लोग कर रहे थे ना, एट दैट टाइम यू हैव टू, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था. देखिए, इफ यू हैव 0.002, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? डेसिमल के बाद कितने हैं? 3 है ना? तो 14 माइनस 3 और 2 का जो लॉग होता है, तो वैसे ही करना है यहाँ पे. तो वी हैव, वी विल राइट दिस एज 0.0134. एक सेंस किसान ऑफिशियल में. So it will be 14, like pH नहीं, this is, wait a second, the concentration of OH negative इतना है. So pH will be equal to 14 minus 1234, and then the plus the log of 134. 134 का सर log कैसे निकलेगा? 134 का you will do the prime factorization कर लीजिएगा 134 का. एक सेंस ऐसा नो? 134 को 2 से डिवाइड करके then you will get the pH. Now this is calculation. अब ये calculation हम नहीं करेंगे. Got this? ऐसा नो? Please tell me. जनरली फिर आपको ना लॉग की कोई ना कोई वैल्यू दी भी रहेगी, है ना? समझा? क्वेश्चन itself they will give you the log value. You copy this down. Raise your hand once you're done.
By the way, those who are done, they can start doing this question and then send the answer on my WhatsApp. इतना ही करना है आपको. Like, you don't have to calculate the complete pH right now. Calculate the pH of HCl solution whose concentration is 0.2 molar, and the acid association constant, it is equal to 4.9 into 10 to the power minus 10, है ना. So obviously you can see that 10 to the power minus 10 is very low, तो alpha को आप ignore कर दीजिएगा. ठीक है. H plus concentration will be under root of Kc only, है ना. ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है. In this case you are going to take Ka rather than Kb. चलिए, do this. Raise your hand once you, नहीं, sorry, send the answers once you are done on my WhatsApp.
Why do I have two chats? Sir, 0.308 can we take as 0.3? Yeah, you can. Log value. What log value, Zainab? You need some information. आप बस h प्लस हमको बता दी लॉग की मतलब वो कर दीजिए ना मतलब व्हाट डू आई से गिव मी द एक्सप्रेशन नो नीड फॉर द कंप्लीट कैलकुलेशन ओह माय गॉड सेंड मी इन व्हाट्सएप अली इतना हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे चैट में सेंड मी इन व्हाट्सएप आई वांट टू सी द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग Shaima and Jasleen, those who have done, you also please send the answer. Okay, Ali, looking at your answer. Fine. अच्छा 4.9 प्रॉब्लम ठीक है you know what you complicated it by basically देखिए अली it should have been better ना कि आप 4.9 को 49 कर लेते फिर 7 बाद में निकल जाते 7 बाहर निकल जाता what do you think Ali that would have been better right Yes, sir. and you are not calculating the k you are calculating the h plus ना k is equal to इतना बिल्कुल k is equal to दो अंडरलाइन करके लिखा है you are calculating the h plus अंडर रूट कितना क्या आ रहा है भाई आपका ये भाई दिस इज रॉन्ग ना क्या कर रहे हैं आप हाँ अली व्हाट यू हैव डन लाइक आफ्टर 98 अंडर रूट 98 इज इक्वल टू 7 No, sir. वो सर वो गलत था वो पहले लिखा था मैं तो 98 ही तो लिखा हुआ है और क्या सर 9.9 9.9 व्हाट इज दिस h plus ion concentration यस सर Let's see. देखिए यहाँ पे कैलकुलेशंस में ही आपको दिक्कतें आएंगी है ना कैलकुलेशन इज नॉट केमिस्ट्री बाय द वे तो फिर भी आपको सिखा दे रहे हैं 4.9 इंटू 10 to the power -10 इंटू 2 सबसे पहली चीज
4.9 का डेसिमल पॉइंट और अच्छा इंटू 2 नहीं इंटू 0.2 है ना, दोनों के डेसिमल पॉइंट को हम 10 के अंदर रखते हैं, तो इट विल बिकम 49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 2. डज दिस मेक सेंस? yes or no? Please tell me. Somebody was saying something. What's that? बोलिए क्या बोल रहे थे? Sir, I said it's 0.2. What है ना? So you wrote it जीरो, 2. हाँ हाँ 0.2 ठीक है, थैंक यू, वी कैन do it. अब ठीक है, नेक्स्ट वाला. नाउ यू सी 4.9 and 10 to the power minus 12 both of them will come outside, it will become 7 into 10 to the power minus 6 and under root 2 बच जाएगा. सही है या ना? बोलो भैया, सही है? सर ओ अच्छा, 98 को आपने अंडर रूट 98 इज इक्वल टू 9.9 किया. हाँ ठीक है, तब ठीक है, चलेगा. सो इट इज बेसिकली 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू अंडर रूट इज 1, अंडर रूट 2 इज 1.4. तो 14 7 जा 98 है ना, तो पॉइंट है तो 1.9.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6. दिस द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, चलिए आपका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ गया, बट आई थिंक दिस वाज इजियर होपफुली. 9.998 का अंडर रूट किया आपने, बन गया. गुड जॉब वाली. लेकिन आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू रोट के इज इक्वल टू 9.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6. हमें आपने गुड जॉब बोलने बोला, आप डांट भी सुन आप. के तो 9.9 नहीं है ना अभी. यस सर। हाँ तो फिर क्यों बोले हम गुड जॉब आपको? क्यों बोले हम? व्हाई शुड आई हैव माय एक्सपेक्टेशन सो लो? बट स्टिल इट्स गुड. ठीक है, बट स्टिल इट्स फाइन. ठीक है. तो मैं इट्स लाइक कंफ्यूजिंग ना, आपने वहां पे 7 इंटू 10 पावर माइनस 6 भी लिखा हुआ है, 9.9 भी लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, कैसे समझे क्या लिखा है आप? चलिए, now the concentration of H plus is 9.8, तो pH निकालने के लिए it will be 9.8 into 10 to the power minus 6. अगर आप लोगों को याद हो कैसे करते थे pH के लिए, बताइए जरा. डायरेक्टली इससे निकालते थे ना हम लोग. It will pH be plus approx how much? What? आवाज नहीं है भाई कभी. डायरेक्टली बताओ ना कैसे. अरे यार देखो, यही चीज आप लोग भूल जाते. देखिए, लिखो इन द नोट्स here. H plus कंसंट्रेशन है, तो जितना डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ऐसे इसको फॉर्मुलेट कीजिए, है ना. तो क्या- अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए सिंपल. minus log of the concentration of pH 9.8 into 10 to the power minus 6. This will be equal to minus log of 9.8 and plus log of 10 to the power 6. So this will be equal to 6 minus log 9.8 will be approximately equal to 1. है ना? Because it is approximately 9.8 approximately 10 ही है. So log 9.8 is equal to 0.99. तो 5.01 pH आ जाएगा इसका. डन टिल हियर. जल्दी कीजिए इसको. We will see one more question. एक एसिड एक बेस देख लिया हम लोगों ने. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द कैलकुलेशन ऑफ अल्फा. बहुत आसान आसान सवाल है, जल्दी कीजिए. रेज योर हैंड इफ यू डन. अबीर, अबीर कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन?
ये लगता है आपकी कनेक्शन बहुत ज्यादा खराब है। जोबिता वेटिंग फॉर यू, जोबिता आर यू देयर? ठीक है, दोस्त हुआ डन ना, प्लीज राइट अ क्वेश्चन। Calculate percentage dissociation of 0.2 molar HCN solution with Ka is equal to 4.9 into 10 to the power minus 10। ठीक है, सेम का आपको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? Whenever they are asking for percentage dissociation, it means they are asking for alpha, right? So alpha will be equal to under root of Ka upon C। The value of Ka, it is equal to what? हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, नहीं समझ गया। K is equal to what? 4.9 into 10 to the power minus 10 upon 0.2 का अंडर रूट, which will be equal to, कैसे करें बताइए इसको जरा। both the decimals I can remove, right? 49 into 10 to the power minus 10 upon 2 लिख सकते हैं, this will be under root। अब इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा 49 को, 49 will get outside, it will become 7 into 10 to the power minus 5 upon root 2, root 2 is 1.4, which will be equal to how much? 7 into 10 to the power minus 5 upon 1.4 को 14 लिख देता है, 14 into 10 to the power minus 1, so this will be divided by 2 and this will become alpha is equal to 1 by 2 into 10 to the power minus 6। सही है गाइस, ये दोनों? नहीं, -4 ना, 10 to the minus 1 will go above, it will become positive ना, 10 to the power minus 4। सही है, हाँ यार देखो, सही है। अरे बोलो भैया, यस और नो गाइस, नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को कैलकुलेशन? अली, जोबिता, जसलीन, साइमा, जैनब, Yes, sir. करेक्ट है ना? यहाँ तो कोई मिस्टेक तो नहीं, देखिए मिस्टेक हो भी सकता है। इट्स फाइन, so I can write this as 0.5 into 10 to the power minus 4। This is degree of dissociation, percentage dissociation will be, इसको percentage में अगर करते 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, percentage dissociation will be equal to 0.5 into 10 to the power minus 4 into 100, which will be equal to 0.5 into 10 to the power minus 2, या फिर इसको बोल सकते हैं 5 into 10 to the power minus 3 परसेंटेज। ठीक है, तो एक इस टाइप का सवाल आ गया। Waiting for Jasleen and Shaima। Right, last topic for today, relationship between हाँ 100 into the alpha is the formula। अल्फा इज बेसिकली अ फ्रैक्शन ना, 0.1 का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन 10। वन आयन, वन इलेक्ट्रोलाइट आउट ऑफ द 10 इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट, है ना? तो जब भी आपको फ्रैक्शन कितने परसेंटेज करना रहता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, नेक्स्ट, रिलेशनशिप
between Ka and Kb of conjugate acid base pair. ठीक है, when you have acid that is Ha, इसको जब आप पानी में डालिएगा then it will give you H plus and A negative. ठीक है, so this is your acid. A negative उसका conjugate base है. Now when you add A negative in water, then it will form Ha and it will give you OH negative as a, तो ये base इस तरह काम कर रहा है, right? So we have now conjugate acid base pair. For this reaction, I can write the K, it will be equal to the concentration of H plus into the concentration of A negative divided by the concentration of Ha. For this, I can write the Kb, which will be equal to the concentration of Ha into the concentration of OH negative divided by the concentration of A negative only because water is a pure liquid और pure liquid के हम लोग लेते नहीं है ना, we do not write pure liquid in the equilibrium constant. If I write Ka into Kb, this will be equal to this whole thing multiplied by this whole thing. Right, a few things will get cancelled here. If you see Ha will get cancelled, A negative and A negative will get cancelled. The product of K and Kb will be equal to H plus into OH negative. Now, H plus into OH negative will be equal to 10 to the power minus 14 at 25 degrees Celsius. It is only dependent on 10 to the power minus 15. K into Kb it is equal to what? 10 to the power